Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Karam Sir. I hope you will find. Today's topic is work. So students, what is work? Right answer is work is said to be done by a force when a force acting on a body produces a displacement in any direction. Work is said to be done by force. I repeat, work is said to be done by force when a force acts on body produces displacement along the direction of force. So work is said to be done by force when a force acts on body. जब कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. सो फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट. When a body changes its position from point A to point B, then it travels some displacement. जब कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करती है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को क्या करती है, ट्रैवल करती है along the line of action of force, or we can say that direction of force. For example, अब बॉडी एक बॉडी है जो एक पोजीशन ए के ऊपर टिकी हुई है. When we apply a force F, then it changes its position from A to position B, travel some displacement x, that is work done. हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ए पोजीशन के ऊपर है और हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, then it changes its position from A to B along the direction of force. जिस डायरेक्शन के अंदर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की क्या है, मूवमेंट. सो दिस इज वर्क डन. दैट इज वर्क डन विच इज इक्वल टू F into S or F dot X. The dot product of external force, वो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई की है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको मूव करवाने के लिए, डॉट एस. एस मींस डिस्प्लेसमेंट और हम एस की जगह पे एक्स वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं. सो व्हेन वी ओपन द डॉट प्रोडक्ट वी नो दैट cos थीटा कम्स टेक प्लेस. जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, cos theta. So it means work done which is equal to dot product of external force and displacement. जब हम उस dot product को ओपन करते हैं तो हमारे पास cos theta trigonometric ratio आती है. So
theta is the angle between force and displacement. Theta is the angle between force and displacement. We already know that dot product of two vector quantities is a scalar quantity. It means जो work done है हमारे पास, जो work है वो एक scalar quantity है. और force is the vector quantity and displacement also vector quantity. Vector quantity means वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट हमें ये पता है कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी. सो वर्क डन हमारे पास क्या है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल मास, एनर्जी, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा. इन सभी का मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती. सो दिस इज अ वर्क डन. सो ये था वर्क डन की डेफिनेशन. और जब डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला of work. Dimensional formula of work. अभी हमने इस लेक्चर के अंदर ये सीखा कि वर्क डन किसके इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स into displacement s. Dimensional formula of force m1 l1 t minus 2. M is mass, L length and T stands for time. So dimensional formula of force which is m1 l1 t minus 2 and s displacement, and displacement जो है this is length. So m1 l2 t minus 2. This is the dimensional formula of work done. Units, अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक एसआई यूनिट्स होती हैं, एसआई सिस्टम होता है और एक सीजीएस सिस्टम होता है. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट एसआई सिस्टम. इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क is joule. 1 joule which is equal to force, SI unit of force Newton, into displacement. Unit of displacement is meter. It means 1 joule which is equal to 1 Newton meter. So 1 joule की डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन ऑफ 1 joule. Definition of 1 joule is said to be done if force of 1 Newton acts on a body produces a displacement of 1 meter. This is the 1 joule definition of work done. और 1 joule जो है वो SI unit है work. In CGS system, unit of work is
egg, E-R-G, egg. CGS unit of work is egg, which is equal to CGS unit of force, dyne, and CGS unit of displacement, which is equal to centimeter. It means one egg, which is equal to one dyne into centimeter. So CGS सिस्टम के अंदर अगर हम डेफिनेशन देखें तो one egg of work is said to be done if a force of one dyne acts on a body produces a displacement of 1 centimeter. So these are two systems, SI system and CGS system. I hope आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और इसकी यूनिट्स इन SI सिस्टम इन CGS सिस्टम अच्छे वे से बेटर वे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस जिसके अंदर थीटा जो है विच इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी कितनी वैल्यू होती है जब कोई भी बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स मूव करती है और जब बॉडी परपेंडिकुलर मूव करती है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस लेक्चर के अंदर हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेके चलेंगे और ये चेक करेंगे कि जब हम थीटा की डिफरेंट वैल्यू लेके चलते हैं तो जो वर्क डन है वो कितना होता है अलग अलग केसेस के अंदर। सो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो और कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए साइंस के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।